In the Torpa and Rania blocks of Jharkhand, abject poverty, numerous hardship, exploitation, and oppression of women, particularly by outsiders, was not new. Geographical confinement, isolation, and apathy resulted in suffering and making them vulnerable to all kinds of difficulty. Along with women, children were also the most neglected group. Dilapidated school buildings, lack of teachers, and absence of basic schooling facilities made things even worse. To ensure general levels of prosperity and development in the region, the Torpa Rural Development Society for Women, a non-governmental organization, started its initiative to empower the tribal community in 1989. With particular focus on livelihood opportunities for women and education for children, a committed mission for change began under the leadership of Center for Women's Development, or what is popularly known as Mahila Vikas Kendra. Schooling is a necessity to realize the mission of education for all, but socio-economic disadvantage and administrative negligence hampered such prospects. The organization, therefore, in its main center started running a model nursery school for children between the age group of 3 to 6. Increasing awareness among parents and support from the center has ensured higher enrollment of children in the school. The carefully designed curriculum, playway method of teaching, and persistent hard work of the teaching staff certainly builds the hope of a promising future for children. अंकों का कार्ड है, क्या है? इसमें 1 से 10 तक की संख्या लिखी हुई है ना? इसके पास 6 का कार्ड। कौवा देखे हैं? कौवा कैसे रोता है? In fact, today the situation is such that there is an ever-increasing demand for admission of children from even far-flung areas. Along with the Bal Niketan, Balwari centers also function in villages to ensure that the children living here are not left out from formal schooling. Constant engagement and commitment of teachers, creative visual aids, simple incentives has not only induced competitive spirit among children, but has also led to parents' involvement in children's education. Indeed, the winds of change have begun. मेरा गांव है जटिन टोली और मेरा नाम है सुगंधित हेम्ब्रम और यहाँ बालवाड़ी में मेरी बच्ची पढ़ती है और अभी 4 साल की है लेकिन बहुत कुछ सीख गई है और यहाँ आने से साफ सुथरा भी सीख गई, पढ़ना लिखना भी ढेर कुछ पकड़ ली है। अभी ए बी जेड तक जानती है, लिखती भी है और पढ़ती भी है बहुत कुछ, इसलिए यहाँ बालवाड़ी में मेरा बच्ची का बहुत ही फर्क हुआ। For students from standard 2 to 8, remedial classes are also being provided in interior villages. To inculcate an environment that promotes education, these classes are held in the evening with the help of solar lanterns. Saturday competitions, quiz programs, and tuitions by trained animators in these night schools ensures almost 90% attendance of children and helps in creating an environment conducive for education. To make education a fun-filled experience and instill secular values, celebration of national days along with festivals like Diwali, Christmas, Raksha Bandhan is also a part of the education curriculum. It helps children to understand and respect diversity and develop a modern outlook. Not long ago, the pathetic condition of government schools and absence of teachers made schooling impossible.
In many such schools, where only the headmaster or headmistress running the school, the organization provided assistance by sending trained teachers who took the load of classes. Local support and the effort of these teachers has ensured that schooling for children does not remain an unfulfilled dream. As part of the KG training program, young women are trained in nursery schooling. Along with benchmark exercises and based on feedback from teachers in the field, the course content of training program is reviewed, which contributes to the making of good teachers. मैं यहाँ केजी ट्रेनिंग इस उद्देश्य से कर रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं बच्चों के बीच में काम करना चाहती हूँ, उन्हें सिखाना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ और मुझे इस यहाँ महिला विकास में इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत सहयोग मिल रहा है जिससे मैं अपने जीवन में आगे बढ़कर कुछ कर पाऊँगी. To make women independent, the organization, under its tailoring and embroidery program, trains women on various facets of the craft. Women from extremely poor socio-economic background and from far-off areas have joined this program, which would enable them to start their own businesses in the future. Residential facilities, constant moral support, and encouragement by the organization has substantially enhanced the entrepreneurial spirit of these women. मेरा नाम सुखमनी हो रहा है. मैं तोरपा मैदान टोली से आई हूँ. तो महिला विकास इसीलिए आई हूँ कि मैं सिलाई सीखूँ कि मेरा अपना आदमी काम नहीं कर रहे हैं तो बच्ची सब पढ़ रही है तो यही उद्देश्य लेकर आई हूँ कि मैं सीखूँ और बच्ची सबका मतलब पढ़ाई में सहयोग करूँ. To economically empower women through livelihood programs, self-help groups have also been created. हम स्वयं सहायता समूह प्रेम ग्रुप से हैं और हम लोग 2012 से शुरू किया है होटल और इस होटल से हम लोग को बहुत लाभ हो रही है कि हम लोग का बच्चा सब हम लोग नहीं सकते हैं तो हम लोग यहाँ से ले जाते हैं पैसा और उसी पैसा से हम लोग बच्चा सबको पढ़ा रहे हैं और अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इस बार फिर दूसरा काम शुरू करेंगे. Enduring effort by the organization has led to diversification of business among the self-help groups. मेरा नाम मगदली करकेटा है. मैं महिला विकास से जुड़ी हूँ और हम लोग का ये समूह का नाम है किरण समूह और किरण समूह में रहते हुए लोन लिए और वही लोन से ही मैं बिजनेस कर रही हूँ. सर्फ लेती हूँ कच्चा माल और उसको मैं बेचती हूँ और हम लोग को ट्रेनिंग भी मिला गया. 1 दिन का ट्रेनिंग लिए और उसमें ट्रेनिंग ले करके मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ और बिजनेस करके मुझे इस सर्फ को बेच करके 60-70 रुपया 1 किलो में 60-70 रुपया फायदा होता है. उसको बेच करके मैं अपना परिवार को चला रही हूँ. Some of these self-help groups have evolved to a level of maturity where they are actually managing even the public distribution system. Group monitoring, maintenance of accounts, and transparent dealings are some of the most indispensable traits which these groups have developed. Technical support from the organization has helped the self-help groups to refine their skills and market the products they make. This has resulted in ensuring a profit-making system in place. मेरा नाम दिव्या तपना है. गांव डेंगर टंगरा टोली. हम लोग गुलाब समूह का नाम है गुलाब स्वयं सहायता समूह. हम लोग महिला विकास तौरपा से जुड़े हुए हैं. हम लोग को 25,000 लोन में मिला था. उसका अनुदान हम लोग को 10,000 रुपया मिला और वो पैसे से हम लोग चटाई का व्यवसाय करते हैं और चटाई बना के हम लोग उसका बिक्री करते हैं और उसी से हम लोग का घर द्वार सब और बच्चे सबको उसी से पढ़ाते हैं और घर द्वार भी चलाते हैं. Under its agro-based intervention scheme, the organization has helped the farm women through financial aids to encourage piggery and poultry. Trained staff have also been sent to impart training to these families on livestock management and care. Kitchen gardens, vegetable seed distribution, modern farm methods, and cultivation of the latest wheat varieties are also part of the agro-based livelihood programs by the organization. 60% of India's lac production is done in Jharkhand.
but lack of scientific knowledge and improper marketing has crippled its production. Torpa Rural Development Society for Women collaborated with the Indian Institute of Natural Resins and Gums and provided training to women farmers on lac cultivation as part of its lac-related livelihood program. Inoculation of lac on host plants, use of insecticides to protect the plant, and other intricate processes require guidance. The organization's support to the women farmers and self-help groups has led to a growth in overall production of lac in the region. Today, these women and their families are also learning to market the lac produced. They are further processing the raw materials to produce items which can be sold in the open market. Quite clearly, lac production has far-reaching prospects and the potential to end the poverty trap. हम लोग को 1,52,000 पैसा दिया ये लोग और महिला विकास केंद्र से हम लोग को स्प्रे मशीन भी मिला, फिर कैंची मिला, दौली मिला, उसी से हम लोग अभी काम चला रहे हैं, इसे सहायता कर रहे हैं और समय समय में ट्रेनिंग बुलाते हैं महिला विकास केंद्र में, लाह के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, उसी आधार पर हम लोग लाह का खेती कर रहे हैं, फिर दवाई सब देते हैं, स्प्रे सब मिला है, दवाई सब मिला, हम लोग जैसे समय समय पर स्प्रे करते हैं 3 दफ़ा, पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे, तीसरा स्प्रे। हम लोग को जिला गठन 6वां दिवसीय में हम लोग को 12 सितंबर 2013 को हम लोग को चेक मिला था मुख्यमंत्री के हाथ से, खुद हम ही लोग गए थे और हम ही लोग लिए, हम ही लोग के हाथ में दिया था। वो पैसा चेक को हम लोग लाए, फिर हम लोग का खाता में हम लोग भंजाए और भंजा करके हम लोग लाए और समूह में जिसका जिसका जितना कितना किलो था वो पैसा को उसी हिसाब से हम लोग बांट लिए। अभी जो महिला विकास केंद्र की ओर से हम लोगों को इस तरह की सुविधाएं मिल रही है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये लाख खेती करके मैं अपनी 2 बहन को मैं रांची निर्मला कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे जो बच्चे हैं उनको भी मैं अच्छे स्कूलों में मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ महिला विकास केंद्र से हम लोग को बहुत सहायता प्राप्त हो रहा है। The organization's commitment to bring change is visible. Economic empowerment of women, livelihood initiatives, education of children, and spreading awareness on burning issues like trafficking, gender equality, etc. has marked the beginning of an irreversible and impact-making movement.